Hello and welcome to the Blazing Solution coaching classes. Today we are discussing one of the most important part of the science, excretory system. So before discussing this chapter, first what is the basic function of excretory system? Excretory system का main function है just remove the waste material from our body. So when our food will be digested, so there are some key components which are mixed in the blood and they are flown with the blood. First, the blood itself plus the excess of sugar, with that plus some water in it plus a dangerous component of the blood which is waste is your urea. So we have to remove this urea from blood because sugar or water, these are beneficial for us. So just to remove this urea, we have a special system, that is excretory system. The excretory system will be consist with the two kidneys like this one and this one. These two kidneys, left kidney and right kidney, these are connected with a tube-like structure, and that is ureter. These ureters will attach to a bowl-like shape, and that shape is known as urinary bladder. Okay, and this urinary bladder has a passes cavity, that is urinal passage. So when this composition, blood plus sugar plus water plus urea, comes with tubes, these tubes, blood tubes, and this is known as renal artery. So when this composition, blood plus sugar plus water plus urea, will come to the kidneys by these renal arteries. So this kidney have a wave-like structure of some tiny capillaries, and these tiny capillaries are known as nephrons. Nephrons. So nephrons are the element who removes this urea from this composition. Got it? So these nephrons will play a key function to remove this urea in this excretory system. So when this urea will be extracted from this composition, blood, sugar and water, then this collected urea will be flown into this ureter, and this ureter delivers this urea into this bowl-like structure, that is urinary bladder, and that urea in the form of urine will be passes through this urinary passage. So this is the whole function of excretory system. But the thing is, who plays the vital roles in this kidneys? So let us discuss that vital roles in the next phase. So the next part of excretory system is what is the inside role of excretory system and who plays the inside role to just remove urea from the blood. So we have four components. The first one is sugar plus water plus blood, and the last one is urea. So our kidneys have three basic components. The first one here, Bowman's capsule. The first one is Bowman's capsule. So Bowman's capsule is a bowl-like structure, एक कटोरी जैसा organ होता है. This one. So you can see this one. This is the Bowman's capsule. The next part of the kidney, that is Henle's loop.
the second part, and the last one, the third, is collecting tubes. Collecting tubes. So this composition, sugar plus water plus blood and urea, ये सबसे पहले comes into Bowman's capsule. सबसे पहले कहाँ आता है? Bowman's capsule में. And Bowman's capsule के बाद, see here, this is renal artery. We have discussed. This is renal artery. यहाँ से आपका this composition Bowman's capsule में आया. And after that Bowman's capsule, the blood will be separated out. ये blood आपका इस वेनल के अंदर blood will be separated. और बचा हुआ जो composition था, कौन कौन सा? वाटर प्लस शुगर प्लस यूरिया, ये तीनों कहाँ गया? यहाँ से सीधा सेकेंड पार्ट हेनलेज लूप के अंदर. और हेनलेज लूप के अंदर काफी देर तक लाइक दिस, इस लूप के अंदर एक कंटिन्यूसली ब्लड ट्रेवल होता है. और ट्रेवल होने के साथ साथ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लाइक वाटर एंड शुगर, द वाटर एंड शुगर विल बी कम्स आउट वन आफ्टर वन in the slide portion and mix into the blood. So first Bowman's capsule का function क्या है? Bowman's capsule just remove all the blood from this composition and the rest composition water, sugar and urea ये जाता है आपका हेनले लूप के अंदर. हेनले लूप में जाने के बाद कुछ देर के बाद धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कर करके जो आपका शुगर एंड वाटर है ये वापस आके किस में मिक्स होता है? इन द ब्लड. एंड जो बचा हुआ आपका यूरिया होता है वो यूरिया आपका चला जाता है सीधा कलेक्टिंग ट्यूब्स के अंदर. क्लियर? सो फर्स्ट Bowman's कैप्सूल में आया आपका ब्लड प्लस वाटर प्लस यूरिया प्लस शुगर. आफ्टर Bowman's कैप्सूल, आफ्टर दिस वन लाइक दिस, ब्लड आपका सेपरेट हो गया एंड जो अदर कॉम्पोजिशन था वो सब कहां चला गया? हेनले लूप के अंदर. And after this Henle loop, the sugar and water will be mixed. Sugar and water will be mixed to the blood, and जो आपका extra urea था, that urea will be thrown into these collecting tubes. And ये सारी collecting tubes जाकर मिलती है जो अपन ने recent पिछली क्लास में जो पिछले फेज के अंदर अपन ने देखा था. ये सारी की सारी जो collecting tubes होती है, ये collecting tubes मर्ज होकर जाती है और बनती है यूरेटर. और यूरेटर का काम क्या होता है? किडनी से उस पर्टिकुलर यूरिया, इस यूरिया को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वहां से लेकर कहाँ जाना है? उस यूरिया को वहां से लेकर वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट करते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम जब यूरिनरी ब्लैडर आपका फुल हो जाता है, सो दैट यूरिन विल बी फ्लोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी बाय द यूरिनरी पासेज. ओके, सो आई विश आपको ये समझ में आया हो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.